an encounter of a special kind. An encounter that is a sudden unexpected meeting, especially violent, म्हणजे अचानक झालेली भेट, विशेष करून हिंसक, of a special kind. स्पेशल यानी खास, unusual, kind यानी टाइप, एक खास प्रकारची भेट. An encounter of a special kind. My father was a medical professional. Now here, my refers to the narrator's father. Okay, my refers to the narrator. Narrator का मतलब है the one who narrates. जी व्यक्ती आपल्याला गोष्ट सांगत आहे. My father, that is narrator's father, was a medical professional. वे मेडिकल प्रोफेशनल में काम कर रहे थे, वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज. नाउ ये जो कंपनी के लिए काम करते थे, वो कंपनी कहाँ थी? इन रानीगंज. And Raniganj, where is Raniganj? In West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. And all the officers of the company, जो भी officers थे, अधिकारी थे, were housed. Housed यानी to provide a facility to live in. यानी रहने की व्यवस्था की थी in an individual bungalows. Individual, single, separate, inside a large campus. Campus, premises. Our house was in a corner of the campus. That is, our house, that is narrator's house, was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. Now, where was the officers' club? The club was adjacent to the boundary wall of our garden. That means it was next to, त्याला लागूनच ते होतं. ओके, काय होतं? ऑफिसर्स क्लब. द बाउंड्री वॉल ऑफ द गार्डन. द कंपाउंड वॉज लग्जूरियस. यह लग्जूरियस का मतलब है वेरी स्पेशियस. ओके, बहुत सारी जगह रहने वाला, बहुत बड़ा. विथ ग्रीन ग्रास, हरियाली होती, कलरफुल फ्लावर्स and a host of tall majestic trees. A host of a large number of tall majestic trees. The seasonable vegetables in the kitchen gardens of the households. And the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. और दो कारण थे, there were two reasons. One, there were seasonable vegetables in the kitchen gardens. यानी परस बागेमध्ये जो कुछ भी वेजिटेबल्स लगाई जाती थी. एंड द नेक्स्ट इज मैग्निफिसेंट ट्रीज, यानी बड़े बड़े जो पेड़ थे, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली अट्रैक्टेड द स्क्विरल्स, यानी वे आकर्षित करते थे स्क्विरल्स को. एंड मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, और बहुत सारे पक्षी भी. स्पीशीज यानी प्रजाति. अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन एन अश्वत्थ ट्री नियर बाय. लंगूर लोगों का जो ग्रुप था, यानी बंदर, they made their den, a kind of a house, in Ashwath tree nearby. Ashwath, that is people का पेड़. They had all became a part and parcel of our existence. Part and parcel, that is अविभाज्य अंग, essential and integral part of their existence and daily life. That is day-to-day life. A small incident. Okay, so you come to know that in first passage, the writer or the narrator has described the campus. In second passage, he gives a general information. A small incident यानी episode, एक घटना, on Saturday afternoon. When this happened? कब ये घटना घटी? Saturday afternoon left a profound effect on me. Profound, very deep. उसका बहुत ही गहरा प्रभाव मुझ पर पड़ा. मुझ पर यानी to on me means on the narrator. And unfolded before my eyes a whole new dimension. It unfolded, that means it revealed. उसने खुलकर मुझे दिखाया. It showed me a whole new dimension, a new attitude, a new aspect, a new perspective. एक नया दृष्टिकोण दिया to the wonders of God's creation. और ये जो ईश्वर की बनाई हुई रचना है, उसकी तरफ देखने का एक नया दृष्टिकोण इससे मिला.
It was a few days into the puja vacation. Puja vacation को कुछ दिन थे. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me, that is, to the narrator, to become engrossed in various magazines and storybooks, published specially for children in the festive season. और इस तरह से इन पूजा के कारण जैसे दूसरे बच्चों को होता है, इन दिस हॉलिडेज इट प्रोवाइडेड, दैट मीन्स इट गेव एन अपॉर्च्युनिटी, अ चान्स, त्याने मला एक संधी मिळाली टू बिकम एनग्रॉस्ड इन. सो आय कॅन रीड द बुक्स. ओके, आय कॅन गेट फुल्ली ऑक्युपाइड इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन, की जो बच्चों के लिए खासकर ऐसे त्योहारों के सीजन में पब्लिश की जाती है. आफ्टर अ हार्टी लंच, हार्टी that is sufficient and wholesome, यानी मनसोक्त जेवण केल्यानंतर my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap. ओके, मेरे जो पेरेंट्स है और मेरी जो यंगर सिस्टर्स है, छोटी बहनें, they lay down, ते दुपारच्या वामकुक्षी घेण्यासाठी झोपल्या. And I settled down means I got into a very comfortable position with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop, that is background, for reading an adventure story. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring. और जो silence है, occasionally, frequently या बीच बीच में, okay, sometimes it was broken by the sound of my family snoring. यानी मेरे जो family members है, they were snoring. Snoring यानी खर्राटे भरना. That is to breathe noisily through your mouth or through your nose while sleeping. The intermittent chirping, यानी बीच बीच में frequently होने वाला chirping is a sound made by the birds of house sparrows, the harsh cawing of the crow, cawing यानी कौवे की काव काव, and the shrill call of a kite, kite यानी चील, आणि खार जे असते उसका जो बड़ी सी आवाज है, flying high above the ground. So he could hear 4 kind of sounds. The first is of the snoring of the family members. Second, intermittent यानी बीच बीच में होने वाले chirping of the house sparrows. Third, the harsh cawing of the crows. And the shrill call of the kite flying above the ground. Minutes ticked by. समय बीतता गया. The time passed. I became deeply absorbed in the book. और मैं पूरी किताब पढ़ने में खो गया था. Okay, absorbed in, that is engrossed in. I was very occupied with reading textbook. So now we shall do the words and their meanings. Already I have explained you the textbook. Yes, now we shall do the words and meaning. You must understand each and every word thoroughly. An encounter of a special kind. Part 1, I have split the lesson into 4 parts. So it will be convenient for us to learn this. So page number 8, my father was to, in the book, encounter, a meeting especially sudden, unexpected or violent. 2 terrorists were killed in encounter. Okay, चकमकीत 2 दहशतवादी ठार झाले. Special, opposite, ordinary, common, general, usual. Special, unusual. Kind यानी type of. Private, opposite, public. House, provide facility to live. Okay, एखाद्याला राहण्याची सोय करणे. Individual, single, separate. For a particular person, एका व्यक्तीसाठी स्वतंत्र. I wanted to talk to each individual. Inside, outside. Large, very big, huge. To be adjacent to, that is next to. Near, close to. ला लगत, एखाद्या गोष्टीला लागून. Luxurious, extremely comfortable. Opulent, spacious, प्रशस्त. A host of, a large number of. Majestic, bhavya, very impressive, stately. Rubabdar, very big. Constantly, continuously. Attract, opposite, distract.
or repel or repulse. See, in magnet you must have heard this word repulse, and mosquito repellent, this word you must have heard. Fly repellent, if you go to the hotel or the restaurant, there is one blue color machine is there, so that is called as a fly repellent, यानी जिससे कि मक्खियां वहां बनबनाए नहीं. Next is species. Okay, take into consideration, you should pronounce this word correct. कैसे pronounce करेंगे आप? Species, that is प्रजाति. अश्वत्था, that is पीपल का पेड़. In बंगाली language, पीपल का जो पेड़ है उसे अश्वत्था कहते हैं. पार्ट एंड पार्सल, अविभाज्य भाग होता है. एंड एसेंशियल, इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग. इंसिडेंट, एपिसोड, घटना. प्रोफाउंड, डीप, unfolded, revealed, showed. Okay, it showed a whole new dimension, a new aspect, एक नया आयाम, a new perspective, यानी नई दृष्टिकोण देता है, a point of view. जैसे समझो मैं किसी व्यक्ति को आगे से देखती हूं तो ये मुझे व्यक्ति ऐसे दिखाई देगी. ओके, अगर मैं साइड से देखती हूं तो वह व्यक्ति कुछ इस ढंग से दिखाई देगी. एम आई राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ पर्सपेक्टिव, कि हम कोई भी चीज को कौन से एंगल से देखते हैं वैसी वो वस्तु दिखाई देती है. पॉइंट ऑफ व्यू, नया दृष्टिकोण. गॉड्स क्रिएशन, भगवान की रचना. एन अपॉर्चुनिटी, अ चांस. एनग्रॉस्ड इन, होली ऑक्यूपाइड, एंगेज्ड इन, फोकस्ड इन, तल्लीन होना. वेरियस, डिफरेंट काइंड ऑफ. ओके, वेरियस इज एन एडजेक्टिव एंड वेरी ये उसका वर्ब है, यानी टू चेंज. एंड वैरायटी इज इट्स नाउन. फेस्टिव, उत्सव. हार्टी, दैट इज सफिशिएंट. होलसम, मनसोक्त. नैप, 40 विंक्स, या जिसे हम कहते हैं वामकुक्षी. सेटल डाउन, टू बी काम और बिगिन टू लिव स्टडी लाइफ और गेट इनटू कंफर्टेबल पोजीशन. नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये जो हमारे किताब में सेटल डाउन है, सो गेट इनटू कंफर्टेबल पोजीशन. देखो राइटर जो है वह पढ़ने के लिए बैठता है. सो हाउ वी सेटल आवरसेल्फ ऑन अ चेयर, वी टेक सम पिलोज एंड देन वी सिट वेरी कंफर्टेबली. बैकड्रॉप, बैकग्राउंड. एडवेंचर, डेयरिंग, साहस वाली. स्नोर, खर्राटे भरना, दैट इज टू ब्रीथ अलाउड, especially through nose or the mouth. Intermittent, that is frequent, irregular. Chirping, sound made by birds. Okay, ज्याला आपण म्हणतो चिवचिवाट. Cawing, sound made by crow. Shrill, high or a loud voice. Kite, cheel, यहाँ मराठी में कहेंगे घार. Minutes ticked by, that is time passed, समय बीतता गया. Be absorbed in, be engrossed in. Occasionally, sometimes. To snore, to breathe noisily through nose or mouth while sleeping. Campus, ground around the building premises. Now we have done words and their meaning, but now we shall be doing usages. See, I have written usages का मतलब ये है जो भी शब्द हमने सीखे हैं उनका हमें प्रयोग करना आना चाहिए वाक्य में. अगर हम वह नहीं कर सकते हैं सो हमारा स्टडी अधूरा है. See over here, I have used the word intermittent. We are experiencing intermittent shower, that is rain, in this month. He is suffering from intermittent fever, यानी बुखार आता है और जाता है. Intermittent study will not take you to grand success. यानी आज की पढ़ाई 3 दिन नहीं की, फिर 2 दिन की. So intermittent, very irregularly if you do the study, it won't give you grand success. Now the word is house. So it can be used as a verb as well as a noun. ऐसा प्रश्न पूछा जाता है की एक शब्द वर्ब म्हणून वापरा आणि नाउन म्हणून पण वापरा. तर हाउस अगर नाउन है तो उसका मतलब है घर और वर्ब का मतलब है रहने के लिए जगह देना. दिस इज माई हाउस. सो हाउस इज यूज्ड एज अ नाउन. आई हाउस माई फ्रेंड, यानी मैंने रहने की फैसिलिटी मेरे फ्रेंड को दी. नाउ द नेक्स्ट इज कॉर्नर.
Corner is used as a verb also as well as noun also. Corner का noun कैसे मतलब होगा, यानी कोपरा. The room has 4 corners. पर verb करके भी है. राहुल cornered सोहन and recovered the money. Corner करना यानी एखाद्या व्यक्तीला कचाट्यात पकडणे, to force a person into a place or a situation from which it is hard to escape. इस तरह से उस व्यक्ति को घेरना है कि जहां से बचना मुश्किल हो. So the police cornered the thief. Next is bark. Bark, this word can be used as a noun as well as a verb. Bark याने भुंकणं आणि bark म्हणजे भुंकणे किंवा झाडाची साल. I heard a loud bark. मला जोरातलं भुंकणं मी ऐकलं. Or the dogs bark. So this will be verb and this is noun. या और चाहिए, the bark is useful part of a tree. Now the next is book. Book word can be used as a verb as well as noun. Book a ticket. तो book का मतलब क्या होता है, रिजर्व करिए. सो यहां पर कैसे book यूज किया है, verb. I read a book. तो book का मतलब क्या है, noun यानी किताब. A large campus. तो हमें ये फ्रेज अपने सेंटेंस में यूज करना आना चाहिए. The Pune University has a large campus. Our school has a large campus. To be adjacent to यानी लगत असणे, next to. The temple is adjacent to the river bank. या मैं कह सकती हूँ Moria temple is adjacent to the Pavana river bank. Our classroom is adjacent to the office. A host of, that is